So what is it that we have to discuss here? So basically, for taking the keyboard input in Java, we are using scanner class. That is an example. I will explain it how it is working. For running the application, that as you know that in the two way you can run the application. Okay, by using the ID and by using the textpad editor, you can run the file. So first of all, we are using the package as like in C programming or C++ programming. When you write a program, first of all you have to write a header file. But in the Java, in all the cases, there is no requirement to define a header file. There is some kind of special cases is present where you require the header file. So for taking the keyboard input, we require to define a package. So it is called as a package. For importing a package, import java.util.scanner is used. So here java.util is a package. Okay, so package is combination of predefined class. Okay, so package, your class name is scanner. Then for writing a program in Java, you have to define a class. It is similar to your C++ programming language, where for defining a classes, for defining a classes or for writing a program, you have to define a class keyword. As Java is a object orientation programming language, then for writing a program, you have to define here class keyword. And here the public is called as the access specifier. Why it is access specifier? You can access this class anywhere. So there is no any kind of restriction is present that you have to access this class in this location. मतलब आप सारा जगह पर आप एक क्लास यूज कर सकते हो. And next part is we are defining here main method. It is called as the main method. Main method is called as the entry point of program. All program execution starts from the main method. It is called as the entry point of program, or it is called as the heart of the program. So main method is always public, means it is a mandate. When you define a main method, it must be a public, means यू राइट आप कहीं पर भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो, किसी भी ड्राइव में आप सेव कर सकते हो, बट फॉर कॉलिंग द क्लासेस, वो क्लासेस को और वो फंक्शनलिटी को कॉल करने के लिए आपका मेन मेथड का जरूरत होगा, विच इज कॉल्ड एज द इंजन ऑफ द प्रोग्राम. सो इन द मेन मेथड
you have to create a object of class scanner s equals to new scanner. So we are defining a scanner class. Scanner s equals to new scanner. Then we are using system.in keyword. System.in is used to taking the keyboard input. Then it is asking you scanner is a class which is used to taking a keyboard input. As you know that आपको अगर कुछ भी डिस्प्ले करना है स्क्रीन में हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट, और कीबोर्ड से कुछ डेटा को आपको एक्सेप्ट करना है देन यू हैव टू यूज अ सिस्टम डॉट इन कीवर्ड. देन it is system.out.println. So this is used to display data in the screen. जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में यूज करते थे printf, C++ में cout यूज किया जाता है. Then in Java to display anything we are using system.out.println. So it is asking you enter a value. तो आपको स्क्रीन में दिखाएगा that you have to enter a value. So when you are passing any value, so that value is converted as integer. मतलब आप स्क्रीन में जो भी आप इनपुट दोगे so that is a string data. Okay, तो स्क्रीन में आप जो भी इनपुट the input that you are passing that is called the string data. Just a minute. Okay, so string data जो आप accept कर रहे हो, by using of string data you cannot do any kind of arithmetic operation. So that you need to convert this string data into integer. तो आपका जो string data है उसको integer में convert करने के लिए हम use करेंगे next int method. Next int method is used to convert any string data, to convert any numeric data that you are accepted in the screen and store in a variable. Okay, जो आपका string data है जो screen में जो भी आप numeric value ले रहे हो, to converting that numeric value into integer format by using here next int method. So by using of next int method, it is converted this value and store in the a variable. A variable में आपका value store होगा. Then so after storing the value in the next int, then it is printing you enter a second value. So then you are giving a second value here. So when you are giving a second value, then here we pass int b s dot next int method. Then again when you enter second value, उसको भी फिर वो integer में convert करेगा s object के मदद से. s is the object of class. So here s is the object of class. Then आपका value आकर b में store हो गया. अभी आपका वैल्यू क्या होगा ना int c is equals to a plus b. आपका a और b यहाँ पर ऐड हो गया. Okay, so after adding the value, then the value is stored in the c variable. So value is stored in the c variable, then it is display the result. Now see that for running the application, you have to note it down that जब एक प्रोग्राम आप लिखते हो, आपका क्लास का नाम जो होगा आप फाइल का नाम वही रहेगा. जब आप फाइल को सेव करोगे जावा फाइल में तो आपका क्लास का नाम जो रहेगा फाइल का नाम वही रहेगा. तो यू हैव टू सेव दैट फाइल विद द एक्सटेंशन scantest.java. तो देयर इज ए क्वेश्चन दैट in a program there may be more than one classes present. एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस आपका रहेगा. देन उस समय पर आप किस क्लास का नेम में आप फाइल को सेव करोगे. तो एक प्रोग्राम में अगर आपका मोर देन वन क्लासेस रहता है और मोर देन वन क्लासेस रहता है, जिस क्लास में आपका मेन मेथड है यू हैव टू सेव दैट फाइल विद दैट नेम. आपका फाइल का नाम उस नेम में आप स्टोर करोगे. यहाँ पर scantest है तो scantest.java में यहाँ पर स्टोर होगा. Okay, so after storing the file, then it is added the number and show the file. Then how to run the file? Okay, आपका जावा इंस्टॉल होने के बाद आपका फाइल रन होने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे. जस्ट 1 minute.
Now for running the application, you have to open the command prompt. So press the window button, then write here cmd. Now your command prompt is open here. Now after it is open, your file is present where? Your file is present in the D drive. So write here D for moving to the D drive, D colon. So now I am in the D drive. So now for running the Java application, here I have to use Java C file name scantest dot Java. So when I write Java C scantest dot Java, if all the program is correct, then it is return you again D drive. So your program is now compiled. आपका प्रोग्राम यहाँ पर compiled हो गया. अभी इसको execute करना है. For execute the file, you have to write Java scantest. Okay, so after writing this, it is asking you enter a first number or enter a second number. So it is asking you enter a value. Suppose I pass here 50. Then again it is asking you enter second value. So I pass here 60. So it is added the two number 50 plus 60. It is giving you 110. Is it clear to all? Navid, Manisha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The next okay. So now I will move to the different operators.
So now we move to the static variable and instance variable. The variable that is defined inside a class is called as the member variable, and this member variable is of two types. Like if you see the example, I define a class Java. Suppose example, if you define a variable, suppose if you want to define an integer variable for storing a value, I define here int a. So it is called as member variable, and the variable that is defined inside a method. For defining a user defined method, I have to define here void, suppose display. For defining a user defined, if you define a variable like if you define here intc, it is called as local variable. First we define as a local variable. Okay, so first is int a is called as the member variable, int c is called as the local variable. Okay, and this member variable is of two types. One is your first is instance variable, another is static variable. We define here two variables. One is instance variable, another is static variable. Then what is the difference between these two variables? Instance variable means, if you see that when you are hiring a taxi, जब कोई टैक्सी आप हायर करते हो उसका एक मीटर रहता है, तो आप मीटर डाउन करते हो और जितना डिस्टेंस कवर होता है बेस्ड अपॉन दैट डिस्टेंस यू आर पेइंग द मनी, एंड अगेन व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन, अगर कोई दूसरा पैसेंजर वो टैक्सी में चढ़ता है तो फिर क्या करता है ना, उसका मीटर जीरो से शुरू होता है, मतलब वो मीटर बार बार जीरो में आता है और डिस्टेंस कवर होने के बाद सपोज एक 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कोई 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस के हिसाब से आदमी पैसा देता है और जब खत्म हो जाता है दूसरा आदमी बैठता है तो अगेन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. So that is called as your instance variable. Every time when you reach to a destination and when you start a destination, the value is changes. But there is another variable is present, that is called the static variable. देखो ए मीटर क्या होता है ना, जीरो होता है फिर चलता है, लेकिन व्हीकल में एक परमानेंट मीटर रहता है. वो मीटर क्या चेक करता है ना, आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो चेक होता है, मतलब थ्रू द लाइफ स्पैन व्हाट आर द डिस्टेंस हैज कवर्ड. ओके, तो जितना सारा डिस्टेंस कवर होता है वो उसका मेमोरी में रह जाता है. ओके, मतलब वो कभी जीरो नहीं होता है.
So that is called as your, you can say it is a static variable. So static variable value is exist as long as your object is exist. मतलब static variable का वैल्यू कभी चेंजेस नहीं होता है जब तक गाड़ी रहता है, गाड़ी का लाइफ टाइम रहता है, तब तक वो गाड़ी का क्या रहता है ना, वो चलता है, मतलब वो मीटर एग्जिस्टिंग रहता है. लेकिन जो ट्रिप मीटर होता है वो बार बार चेंजेस होता है. तो सिमिलर वे द वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या है ना, वो मेथड में जो वेरिएबल आप डिफाइन करोगे उसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल. ओके, तो लोकल वेरिएबल स्कोप इज, सर हाँ सर अभी तक मेरा म्यूट था तो मैं कुछ सुन नहीं पाया सर. हम, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट व्हाट स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल. Static and variable means what? For storing the memory location, for storing a value, we define a variable. So this variable is of two types. One is your static variable, another is your instance variable. Okay, और another is your local variable. Local variable क्या होता है ना, कोई भी मेथड और ब्लॉक के अंदर कुछ वेरिएबल आप डिफाइन करते हो. जैसे कि एक हो गया आपका यूजर डिफाइंड मेथड, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में आप किए हो, सी प्लस प्लस में किए हो. तो फर्स्ट इट इज डिफाइन ए लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल वैल्यू इज लिमिटेड विद इन द फंक्शन. मतलब ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन करोगे, दैट वैल्यू इज नॉट access anywhere or it is not access what outside of the block. और एक होता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल उसको बोला जाता है. द वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड ए जावा क्लास, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू ऑलवेज इट इज चेंजेस व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. जितना बार आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार आपका वेरिएबल का वैल्यू चेंजेस होता रहेगा. बट सर हाँ, सर यस, सर मैंने सी प्लस प्लस मुझे पता नहीं है तो मुझे मेरा फर्स्ट क्लास है सर. if you know don't know C language, then first you have to learn C language. Clear it. सर So फर्स्ट आई हैव टू लर्न सी लैंग्वेज. yes, and first basic means if you what is your branch? सर माय ब्रांच इज सिविल सर. Okay, so you want to move your career to software development, ne? यस सर यस सर. Okay, so after the classes we will go for a discussion, then you have to go for it. Okay. यस सर. Okay. Sir, now how many members have joined are connected now? 4 members in that including you. Sir, okay, sir. So I am disturbing others, I guess. No, 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 no. It is not like that. Okay, if you don't know C language, then it is suggested that first you go for the C language. In which college you are? Sir, I am in ABIT. ABIT. Which semester? Sir, this is my semester. Which semester? Sir, actually, I am going to appear my third semester. Okay, okay, okay. So we will have a I discussion. have completed my second semester, sir. Okay, okay. So after this class, we'll go for a discussion. Okay, then I will suggest you what to do. Okay. Yes, sir. Okay. And Naved, you did C program. Sir, C++. I did, but You know what is variable, what is function. sorry. Hmm? Okay, so I will have a discussion Sir, with. you are asking me. Yes, yes, Naved. Okay, so after the classes, I will go Okay, for a sir. discussion. Okay, so then we will clear what to do. Okay.
Okay, so now check here that we define these two variable. One is instance, another is static. Local variable means the variable that is defined inside a function is called as a local variable. Local means you cannot access the value outside of the function. जैसे कि क्या होता है, आपका घर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, तो you are not access that property, or any other person cannot access that property outside of the what you can say outside of the particular classes. So similar way, um, the local variable is like that. आप जो भी वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करोगे, so that is limited within that particular function. Okay, so if you initialize int c is equals to 5, so you cannot access this value, or you cannot retrieve this value outside of the classes. So that is the actual work of local variable. Instance variable is what, like every time you are creating a object of class, the variable value is always changes. It is just like I'm discussing about the trip meter. आपका ट्रिप चलता है तो आपका किलोमीटर चलता है, तो उसके हिसाब से आप पैसा देते हो. जब आपका ट्रिप खत्म हो जाता है, अगेन वो जीरो हो जाता है. लेकिन वही गाड़ी में और एक मीटर रहता है, सो दैट मीटर इज अ परमानेंट मीटर, दैट वैल्यू इज नेवर चेंजेस. So that is called the static meter. So throughout the lifespan of the vehicle, the meter reading is fixed. The static variable is also like that. So now I go for it here. The variable defined inside a method are called as the local variable. It is also referred to as a automatic, temporary, or static variable. Local variable must be initialized before the first use. Okay, so when you define a local variable means the variable that you have to define inside a function. जब आप local variable initialization करोगे, local variable जब भी आप declare करोगे, तो you have to initialization it. Okay, Manisha, Disha, understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we are go for the member variable. Member variable means the variable that is defined inside a class. So this one is called as the member variable. Okay, so member variable value, uh, it is it is defined inside a class, and this variable is of two type. One is your static variable, another is your instance variable. When you define as a static INTA, then that is called as a static variable. When you define the variable directly, if you define as well like static INTA, it is called as a static variable. You can say it is called as a static variable. But if you define a variable as like INTB, it is called as the instance variable. It is called as the instance variable. Okay, so instance variable value is exist as long as your object is exist. क्लास का ऑब्जेक्ट जब तक वैलिड रहता है तब तक इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एग्जिस्ट रहता है. एंड इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट, अगर आपका जितना बार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार वो वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. तो नाउ आई विल गो फॉर अनदर एग्जांपल of this static and instance variable. I define here public class static ex
then I define a static variable, static int count. Then here I define a constructor, static ex count equals to count plus 1. Now check here what you have to perform. If I remove static, what happen? And if I not remove the static, what happen? So first I run the file. Okay, so now check. I explain this program. I define a class in Java, public class static ex. I define a variable static int count. So this part is called what? This called as Manisha. Disha, what it called? This part. It is called as a constructor. Okay, so it is called as a constructor because your class name and this method name is same. The class name and constructor name is same. The constructor is used for initializing member variable. So when the constructor is called, at the time of class object you are created, at that timing constructor is called. तो यहाँ पर देखो आपका मेन मेथड में आपका क्लास हो गया स्टैटिक EX. तो मैंने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक EXI इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक EX. तो व्हेन आई क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आपका एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा देन ऑटोमेटिक आपका जो वैल्यू है काउंट, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज 0. जब ए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑटोमेटिक काउंट का वैल्यू हो जाएगा 0 + 1 = 1. तो काउंट में अभी 1 स्टोर है. तो मैंने यहाँ पर काउंट वेरिएबल को कॉल किया. कैसे कॉल होगा ना, ऑब्जेक्ट के मदद से कॉल होगा i.count. तो आपको दिखाएगा यहाँ पर 1. फिर से मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैटिक EXJ. तो फिर से जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर ए वाला स्टैटिक EX कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा. लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपका रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका वैल्यू 1 है. तो 1 + 1 यहाँ पर आपको 2 दिखाएगा. बट if I remove here static, then what it is happened? So now if I remove the static, then when I run the file again, see that every time it is showing you 1 and 1. First I am creating a object of class static I new static EX, then constructor is called. When constructor is called, count value is increment to 1. 0 + 1 is 1. Then again when I am creating a object static EXJ equals to new static EX, then when again I am creating a object, then count value is increment to again 1. फिर से आपका वैल्यू रीसेट हो जाएगा 0. फिर से ये आपका 0 + 1 1 दिखाएगा. लेकिन अगर यहाँ पर आप स्टैटिक डिफाइन करते हो देन आपका वैल्यू ये बार बार रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा. तो ये नेक्स्ट वैल्यू से काउंट करेगा. पहले 1 दिखाएगा देन इट इज शोइंग यू 2. Clear? Yes, sir. Disha? Yes, sir. नावेद समझ में आया कुछ? Yes, sir. Okay. Okay, so it is the example of the static. So in next class I will go for the operators. So how the work with the different operators in the Java, as well as the packaging program, how you have to divide your complex program into a sub modules. Okay, so in Monday we have one discussion. Okay.
Yes, sir. Okay, so I'll call you both to